Today we are going to discuss the process of oogenesis. oogenesis में हमने already जो है क्लास में इसको कर लिया हुआ है, लेकिन इसको मैं एक दफा और आप लोगों को जो है ना मैं आपको एक दफा और जो है मैं बताऊंगी, ठीक है. First of all, इसको पहले let us read the slide, then I will go to the board and I will explain it for you people on the board. This is not included in the exam at present, but it is a very important topic and you can expect it for your board exam. ठीक है. oogenesis, ओ का मतलब एग लिख लीजिए. ओ मीन्स एग, जेनेसिस मतलब क्रिएशन. जेनेसिस जब बात करते हैं ना तो जेनेसिस ऑफ समथिंग मीन्स क्रिएशन, बिगिनिंग, स्टार्टिंग. ठीक है. ओ मीन्स एग. इससे पहले वी हैव स्टडीड स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मा, स्पर्म्स, मेल गैमीट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टार्ट, क्रिएशन. So oogenesis, what is it? It is the creation of the egg. Right now, this colored block that we have over here, this is showing us what is happening inside the ovary of the embryo. Embryo क्या होता है? Embryo is the female development. The baby girl during the process of development is called embryo, and these eggs are present inside the ovaries of the female embryo even before birth. पैदाइश से भी पहले अल्लाह ताला ने ये एग्स उसकी ओवरीज में सेट कर दिए हैं. फिर उसके बाद एट अ स्पेसिफिक फेज दैट एग इज गोइंग टू कम एंड स्टॉप, एंड देन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी की एज कौन सी होती है? प्यूबर्टी इज द एज व्हेन द फीमेल बिकम्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है फीमेल, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ये आगे इसकी डिवीजन होती है. नाउ दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस. Meiosis, because you know O क्या है? O is a female egg which is going to be having a haploid number of chromosomes. Write down everything बेटा. बीच में मैं बहुत कुछ काम की बातें बोल जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या बताया. ठीक है, वो वाले वर्ड्स फिर वो निकल जाते हैं. तो आप सारी चीजें जो है ना जैसे आप लोग क्लास में करते हैं वैसे साथ साथ हेडिंग डाल के नोट किया करें. ओके बेटा. अच्छा जी, अब यहाँ पर यू नो दैट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स मींस मियोसिस. ठीक है. मेल्स के अंदर इफ यू रिमेंबर स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मेल्स के अंदर गैमीट्स प्रोडक्शन टुक प्लेस इनसाइड द seminiferous tubules, and the maturation of the spermatozoa took place inside the testes at the same time. उसी वक्त हर रोज की बुनियाद पर every day जो है ये production. Now oogenesis is a process that takes place in a very long time. It starts in the embryo stage and it completes even after puberty. Even after puberty कब खत्म होता है? The meiosis of the female egg completes only and only if it is fertilized. ठीक है. अब एक स्टेज जो है वो क्या है लिख लीजिए अपने पास. फर्स्ट स्टेज जहां पर सीजेशन ऑफ डिवीजन होती है, फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है? वो है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1. ठीक है. मियोसिस 1 की क्या है? मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 पर स्टॉप होता है. दैट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो स्टेज. मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के ऊपर स्टॉप होता है. और दूसरा जो है आपके पास क्या है? दूसरा जो है वो है आपके पास मियोसिस 2 की मेटाफेज 2. मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 के ऊपर जो है ना वो स्टॉप होता है. मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज, एंड मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 पे आफ्टर प्यूबर्टी. मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 से आगे कंप्लीट मियोसिस हो जाएगी ओनली एंड ओनली इन द केस व्हेन द एग इज गोइंग टू बी फर्टिलाइज्ड. ये आप देखिए ये 3 स्टेजेस हैं. एक है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, एक है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, और तीसरा है फर्टिलाइजेशन. ठीक है. दीज आर द 3 स्टेजेस जिसके अंदर जो है वो एग जो है वो आके अपने आप को सीज करता है. इट सीजेस इट्स डिवीजन इन दीज 3 स्टेजेस. ठीक है. नाउ यहाँ से हम पहले इसको पढ़ते हैं. oogenesis is a process by which the female gametes क्या है? The egg cells are produced in the ovary. इसके बाद बेटा बोर्ड पे भी लेके जाऊंगी आप लोगों को. ठीक है. बोर्ड पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे. It begins during the fetal development when the oogonia क्या है? oogonia are the egg mother cells. जैसे कि spermatogonia हमने पढ़ा था, they are the sperm mother cells. तो oogonia are the
egg mother cells, and they are formed from the primordial germ cells by mitosis. Primordial germ cells क्या है? First life giving cells. First primordial live germ cells. Germ cells का मतलब ये है जिनमें से gametes बनने हैं, ठीक है? Reproductive cells are going to be produced from the germ cells. By which process? By the process of mitosis. अब ये देखिए, this is what is happening. Look at the arrow. Primordial germ cells, first mitosis होनी है. क्यों? क्योंकि germ cells में से बेटा up to 400,000 eggs बनने हैं, and these 400,000 eggs, इनमें से about 500 will be released during the reproductive age of the female. लेकिन those 400,000 eggs, they will be divided from the primordial germ cells. Mitotic division, you know कि आपको 2 cells देता है, एक कैविटी में आ जाएगा और एक जर्म लाइनिंग के साथ अटैच हो जाएगा. तो आप देखें कि ओनली 1 सेल जो है उसको यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? When does oogenesis start? Now all these points देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है ना, ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये पूरी डायग्राम जो है, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन. नाउ दीज 9 पॉइंट्स जो हैं, ये आपकी बुक में पैराग्राफ, written as a paragraph in your book, ठीक है? लेकिन ये open up किए हुए मैंने, and these are 9 short questions which are going to be extracted from your book. Now oogenesis, what is oogenesis? Oogenesis is a process by which the female gametes or egg cells are produced in the ovary. When does oogenesis begin? अगला सवाल आंसर लिखा हुआ है. Oogenesis, it begins during fetal development when oogonia क्या है? oogonia diploid है, ठीक है? They have a diploid number of chromosomes, are formed from the primordial germ cells by mitosis. This is the first step. It begins during fetal development when oogonia are formed from the primordial germ cells by what? By the process of mitosis. Oogonia undergoes growth to form the primary oocytes. Now undergoes growth to form the primary oocyte. Primary oocyte क्या है? Primary oocyte आपको पता है जो आपका क्या होता है, अपना जो cell cycle, interphase of the cell cycle. During interphase of the cell cycle क्या होता है? कोई मुझे पहले आंसर दे. Somebody tell me what happens during the interphase of the cell cycle. Yes beta, anybody? What happens during the interphase? Because now you see mitosis has created 2 cells. The oogonia has created 2 cells. One is going to stay in the chamber and one is going to join the germ lining. The one that is going to stay in the chamber of division is going to, first of all, it is going to undergo some changes and it will be converted into the primary oocyte, which is diploid in number. ठीक है जी? अहद अब्बास, मेरी आवाज अभी आ रही बेटा? हम लोग बेटा कॉलेज से क्लास ले रहे हैं, इस वजह से शायद आवाज आपको कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा. अभी आवाज आ रही है अहद अब्बास? ओके. प्राइमरी oocyte क्या है? oogonia undergoes growth to form the primary oocytes. Primary oocytes are the cells which are prepared for division. They are prepared for the division. इनका क्या होगा? इनके अंदर division होगी and they are going to divide further. They are going to carry on the process of meiosis. इनके अंदर क्या होगी? इनके अंदर meiosis होगी, ठीक है? meiosis इनके पास यहाँ पर जो है वो carry on होगी. अभी आवाज ठीक है बेटा? I don't know, इंटरनेट इशू कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास तो सारा कुछ यहाँ पर ठीक है, ठीक है? आप लोग अपने इंटरनेट को जरा एक दफा रीचेक कर लीजिए. अच्छा जी, दूसरी बात क्या है बेटा कि the primary oocyte, it begins the first meiotic division and the first meiotic division is actually meiosis 1. meiosis 1 में क्या होगा बेटा? meiosis 1 के अंदर हमारे पास क्या है? meiosis 1 के अंदर आपके पास जो है the first phase of division is going to take place and that first phase of division क्या होगा? That first phase of division is going to bring about the reduction in the chromosome number. ठीक है? It is going to bring about the reduction in the chromosome number. What happens? The primary oocyte begins the first meiotic division, but it stops at prophase 1
until onset of puberty. Now this is happening during the embryonic stage of the female. It is happening during the embryonic stage of the female. Females की embryonic stage में ये हो रहा है. That it is taking place in the embryo and the meiotic division is going to start. And meiotic division जब start होगी तो it is going to stop at prophase 1. Meiosis 1 is not going to be completed. Embryo is going to take birth in that situation in which in her ovaries the primary oocyte will be present in the situation of prophase 1. At puberty means reproductively active age. Okay? At puberty, some follicles develop each month in response to the follicle stimulating hormone. Now, what is going to happen? These prophase 1 के अंदर जो बंद हुए हैं, they will develop every month under the action of follicle stimulating hormone. And this follicle stimulating hormone is produced by the pituitary gland. The primary oocyte completes its first meiotic division under the condition of the follicle stimulating hormone, and it forms two cells of different sizes due to unequal distribution of cytoplasm. ये देखिए, this is after birth, meiosis 2 start होगी. Follicle stimulating hormone is the hormone that is bringing about this change. ठीक है? Unequal distribution of cytoplasm is going to take place. First polar body has less cytoplasm, and this is the secondary oocyte. Inside secondary oocyte now, this secondary oocyte complete meiosis 2 is not going to take place. Secondary oocyte के अंदर meiosis 2 कहाँ पर arrest होगा? It will be stopped at metaphase 2 and it will be ovulated. Ovulation means release of the egg. Ovulation का क्या मतलब है? Ovulation का मतलब है release of the egg. देखिए, primary oocyte completes the first meiotic division to form the two cells of different sizes due to unequal distribution of cytoplasm. The one with the less cytoplasm becomes the first polar body, which eventually degenerates. The larger cell becomes the secondary oocyte and proceeds to meiosis 2. But the meiosis 2 stops at prophase 2. Meiosis 2 कब complete होगा? Meiosis 2 will be completed if the cell is fertilized, forming an ovum and the secondary polar body. In case the cell is not fertilized, then what is going to happen? It will be wasted in the case of meiosis 2. ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये आपका लेक्चर हो गया है complete. In case you have any